Hi guys, मैं हूँ कनिका कपूर. Please don't forget to subscribe for indie and folk project. Any woman holding her breasts naked looks wonderful. Why not? अभी मेरी विजुअलाइजेशन को कंट्रोल करता हूँ मैं. ठीक है, थैंक यू. What do you think about the contribution of social media किसी भी गाने की पॉपुलैरिटी में? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. A very well-known artist said to me on my face, "You're so shit." को तो पता ही है कि आप एक्टिंग कर सकती, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. शाहरुख खान का ऑफर आया नहीं आया? हाउ इज द इक्वेशन विद अरमान नाउ? Who's Armaan? गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को, काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मट्ठा, एक ही रट्टा एक दुपट्टा, मर्द है बिन पेंदी लोटा. तो जब भूल जाते हैं तो वो माइक ऐसे कर देते हैं. अच्छा, आप लोग गाओ, आप गाओ. Can't share a washroom. I don't even share a washroom with my own husband. वाकई में सोने दी. Alright, are we good to go? Bismillah करें? Yeah. So if a woman as beautiful as Kanika opens her mouth to ask for something, कोई भी सोचेगा, ये कहेगा कि चांद तारे टाइप का कुछ ऐसा फिलोसफिकल करे, तो वो बोलेगी मुझे आईफोन का चार्जर चाहिए. How does that happen? मतलब तो सामने वाले के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे? I don't know. You tell me. मैं तो सदमे में हूँ. Do you have? And it's like, oh, what do you want? iPhone का चार्जर. Welcome to Indie and Folk Project. My name is Peeyush. Thank you. And important thing is कि ये conversation एकदम ही वैसे रहने वाली जैसे मैंने आपको बताया है. अभी आपको कोई लगे कि this is a football question, you can say, ठीक है, thank you so much. I don't want to answer that. Okay. Right? Yeah. And since this is digital, you can say whatever you want to. There's no governing body here. कोई बात. ठीक है? I don't think about anything I say. I just speak my mind always. That's wonderful. I've seen all your interviews, and the first thing that came to my mind was, it is said कि दुनिया आई ले आई है. Thank you. Thank you so much. आप अपना लेफ्ट प्रोफाइल दिखाओ, बहुत बढ़िया लगेगा. शाबाश. The 5 elements that make nature, the earth. Then you say ये दुनिया तो पित्तल दी. Yeah. मेटलर्जी वालों ने अपने छाती में मार लिया कि पीतल तो हमें अभी तक लगता था, but then Kanika has said पित्तल, then it's पित्तल. It's one of the first songs. It is ये दुनिया पित्तल दी. It's true, right? अभी मेरी बात तो हो रही थी इस बारे में. क्या बात हो रही थी? इनके साथ बात हो रही थी. क्या कह रही थी Kanika? So I tried to tell her a joke. What is the world made of? She's still in shock. Are you? Yes. And it has a very deeper meaning. Is it? Please share with us. ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी. Of course. इसका क्या मतलब हुआ? You're better than the world. Is that the meaning? No. देखिए, मैं तो हमेशा से फेल होता आया हूँ. Okay. And I think that जो लोग इस चीज को समझे वो बहुत उन्होंने कनेक्ट किया इस थॉट से जो कुमार जी ने लिखी है. ब्रिलियंट थॉट. एंड आई थिंक जिस समय मैंने ये गाना गाया था उस समय आई वाज गोइंग थ्रू A tough time. a lot of ups and downs and a lot of tough time and कोई हेल्प करने वाला नहीं था. I know I sound like a very bitter person, which I'm not, but because since you asked this question, and ये पुरानी बात है, जब मुझे वो कुमार जी ने समझाया, मैंने कहा ये दुनिया पित्तल दी, मतलब आप ये क्यों लिख रहे हैं? He said, यार ये दुनिया सब मतलबी बकवास फेक दुनिया है, अपना रंग बदलती है. हाँ, जब मतलब होता है तो आ जाती है. और बेबी डॉल तू सोने दी. यू आर क्लीन हार्टेड. तुम समझी नहीं इस दुनिया को, इतनी क्या दुनिया है. Deep. That's deep. He said, मैं ये क्रॉस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे मन में ये बात आई. That's what he said to me. जब बेबी डॉल निकला तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि जो तुम उसमें कुछ है, उस लाइन में कुछ है. ये दुनिया जो तुमने एक यर्निंग एक वो पेनफुली गाया इस चीज को, इस क्रॉस को. Although it looked wonderful. Of course it looks wonderful. Any woman holding her breasts naked looks wonderful. Why not?
अभी मेरी विजुअलाइजेशन को कंट्रोल करता हूँ मैं, ठीक है, थैंक यू. So, At this cost of sounding a creep, but but भाई it is a deep I understand. thought. So finally, everybody has to notice कि ये जो alloy है, ये copper का और zinc का, ये पित्तल है, it's not पीतल. We haven't heard that song from you, the unplugged version of पित्तल दी. हो सोने सोने पटोले लाखा, सोने सोने पटोले, ए तक दिया रहंदिया अखा, ए तक दिया रहंदिया, हो मैं की दसापड़ी वे, ए चन करदा है तारीफा, हो मेरे हुस्न दे कोने 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 दी, हो कोने कोने दी. आगे Baby doll, सोने दी, 24 carat. बेबी डॉल में सोने दी, हो बेबी डॉल में सोने दी. Okay, so how's your equation with Sunny Leone? Leone. Okay. I know Sunny very well. We've done so many songs together, and but obviously, I think since COVID, nobody's really seen anyone because मैं यहाँ थी नहीं 2-3 साल, so I haven't seen her much. But 2 years ago, when we took out a song again together, Are you friends with her? I don't think I'm friends with her, but I know her very well. Yeah. There's no time, I'm very busy. I have a marriage, I have children, my parents, my career, my shows. एक हाथ तो पूरा हो गया, दूसरा हाथ पे आता है. दूसरा हाथ is मेरी भी तो लिफ्ट करा दे. नहीं हो रही है. I'm sure होगी. One thing about Sunny that nobody knows. I think she's just a very sweet, fun, loving, chilled out person. And I don't know how people see her, but that's how I see her. So that's Loreto, Lamarts या Mahanagar girls? Loreto. I knew it. I so knew it. You will be from Loreto. Yeah, I'm a Loreto girl and Mahanagar born and brought up. Mahanagar boys. Oh. मुझे ऐसा लग रहा था. So, do you know that in Gold Market? So I literally live off Mahanagar boys. हमारा hangout place तो your school. Obviously, everyone's hangout place was my school. Loreto Convent. अरे चलो ठीक है, अब ठीक है. You've mentioned that कभी love letter लिखा ही नहीं गया. But you know how Lucknow boys are. Yeah. What is the cheesiest pick-up line that have been used on you? In Lucknow? That I don't remember. Oh. I don't remember. Because the poo syndrome was on. No, it's not poo. But I used to go to McFarlane's. Oh, damn. So my only indulgence to even look at boys was Loreto में कहाँ it was a girls' school. So दूर तक वीराना. दूर तक नहीं and सीधा गाड़ी में बैठो and घर आओ. My mother was very strict. अगर हम 10 मिनट भी लेट हो गए तो कहाँ रुकी थे? रुकना allowed नहीं था. So only place I ever saw boys was at Mr. McFarlane. Mr. McFarlane was one guy, मतलब who's a legend. He is a legend, yeah. मतलब अगर आपने अंग्रेजी उनसे नहीं सीखी, रेन एंड मार्टिन फेल थी उनके आगे. Beautiful. Have you ever this is a popular demand question from the girls in our office. आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? I have been given this question to ask. Please ask my manager. He would love to answer this question. Tell me भाई. क्या है स्किन केयर रूटीन बताओ. She doesn't do anything. She doesn't. She doesn't eat bad. Okay. She eats very good. I eat the bad stuff. Evident yeah, evident. Burger King पर पलने वाले. I. She eats really Loki Tori. What are you saying? Loki Tori? Yeah. And all. So मैं ना lunch में generally घर पे थाली खाती हूँ. But उसमें स्प्राउट्स का सैलेड, लौकी या तुरई, उस मूंग दाल का चिलरा रोटी की जगह. Then I have, so it's a whole green plate every day. That sounds healthy pro max. मतलब इतना तो I'm sure कि जिनको बनाया गया है कि सिर्फ घास फूस खाने के लिए वो भी नहीं खाते होंगे. घास फूस नहीं, it's very tasty. I am sure. मतलब I'm trying to figure out how tasty it would be, but ठीक है. Then sometimes paneer also a little bit, and then शाम को like a big plate of maybe 5-6 eggs. सुन रही हो तुम लोग? नोट करते जाना, ठीक है? It might help you in the future. So basically, your skin is good if you look after your gut.
अभी हमें शो का नाम बदल के इंडियन फोक प्रोजेक्ट से खाना खजाना प्लस कर देते हैं, काफी बढ़िया है. हाँ. So I'm a Lucknow girl at every level, and it's all about chukla ki chaat and khana. You didn't khazana. mention that. I was coming to that, but on my cheat day, which is every Sunday, or sometimes once in a week, Sunday for sure, I have ice cream, I have pizza. Pizza also, I like homemade pizza. मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है. तो ऐसा आपका चीट डे कितने हजार सालों में आता है? हर वीक. क्या बात कर रहे हो, सच्ची? फिर तो गलत ही हो रहा है. हाँ. मेंटल नोट्स ले लिए, हो गया तुम लोग का? वेरी गुड. You are what you eat. ये तो मैंने देख लिया. ऐसे मत कहो आप, क्योंकि तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे अपनी ईटिंग हैबिट्स को. बाय द वे पीपल, And one more thing, if you really want to know, for women, just cut down on dairy, minimum possible, and more protein. प्लीज इफ मदर डेयरी वाज थिंकिंग ऑफ स्पॉन्सरिंग अस, प्लीज अवॉइड दिस पार्ट. कोई बात नहीं, सब कंज्यूम करेंगे, सब कंज्यूम करेंगे. जुगनी तार खाई विच थाल, छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल, रखी साबत सिद्ध दा अमाल, वो पीर मेरेया जुगनी जी, ए वे अल्लाह वालेया दी जुगनी जी, ए वी नवी पीर दी जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी. दम गुटकू दम गुटकू, दम गुटकू दम गुटकू, दम गुटकू दम गुटकू, दम गुटकू गुटकू, ए वे अल्लाह वालेया दी जुगनी जी, ए वे अल्लाह वालेया दी जुगनी जी, ए वी नबी पीर दी जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी. आपने बाकायदा तालीम ली है म्यूजिक की. जी. सिंगिंग 6 साल से शुरू की, तालीम ली, बट people rarely see the side of you where you sing semi-classical, except the college school competition that you won. Yeah. Right? कौन सा गाना उसमें कहता, बैया ना धरो. Yeah. People don't know that side of you. Why? Why don't you show them? Because when I started my Bollywood, my career, I started with Jugni. So when I was called to sing Baby Doll, then Baby Doll happened, Lovely happened, Chittiya Kalaiyan happened, Desi Look happened, Acha Farate, Love Letter, everything was in a box. And because वो चीज़ back to back hit होती जा रही थी, तो जब मैंने अगर सोचा भी कि मुझे ये करना है, वो मुझे सबने कहा कि अभी नहीं. First, take a few years and do what people are wanting from you. तो अगर मैं स्लो गाने भी गाती हूँ, लव सॉन्ग भी गाती हूँ, तो कहते हैं नहीं यार, मुझे वो कनिका कपूर चाहिए, बेबी डॉल सिंगर चाहिए. Don't you feel that now that I have proudly launched my own record label yes, called Bajao Records, from this year you will hear Baiya Na Dharo, and you will hear Thumri, you will hear Thumri with Afrobeat. Damn. You will hear Tarana, you will hear the Jugal Bandis, you will hear, I'm announcing a very, very big collaboration which is ready. It's something that is world class with a classical, one of the greatest classical artists Wonderful. in the country. But you're not telling me right now. I'll tell you off camera. Off camera, but abhi whosoever is watching and is a die-hard fan of Kanika, please subscribe to this channel. You watch the entire episode and you don't subscribe. ये क्या आलस है? You know, when you were saying कि इस तरीके के गाने आपको, it sounds like जैसे बहुत सारे एक्टर्स भी पहले बोलते थे कि स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है. हो गया. अगर पुलिस वाले का रोल है तो पुलिस वाले का ही रोल कर रहे हैं. जब शुरुआत कर रहे थे, did you ever want to break out of this mold and tell them कि नहीं भाई ठीक है, this is it, but can you sample this? कोशिश करी मैंने. They didn't want me to even touch it. Because they think that उनको पता है कि जनता को क्या चाहिए. जनता को यही, आज भी अगर आप देखेंगे, मेरा अब ये भी जो गाना निकला है, आज निकल रहा है कोका. So कोका is a commercial song. But the beautiful thing about Bajao Records is that मेरे ही नहीं और भी आर्टिस्ट जिनके गाने आ रहे हैं, they are able to freely take out what they are good at, what they feel is their USP, and they want to
how they want to write, उनका कुछ change नहीं किया जा रहा है. We are letting them be. ठीक है कि बाकियों ने कहा कि इस तरीके का नहीं, but we would love to hear Bayyana Dero from you. अभी थोड़ा सा 5 रुपए का जरा सा. I'll try. इतना रियाज करके नहीं आई हूँ. तो कोई बात नहीं. But I can do a cover for you and tag you that this is specially for Fever. You can do that for Mahanagar Boy. for Mahanagar Boys, Gold Market लड़की. Yeah. पर अभी एक थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, फिर हम कवर करेंगे. थोड़ा लाउड कर दो, थोड़ा लाउड कर दो. बड़े सालों से नहीं गाया. I was practicing. अब गाएंगे. मैं सोच रहा था कि no. Actually, you know what? I'm not it's sounding beautiful. Come on, please. No, because I need the chords. I don't want to go online singing it like this. चलिए. But just because you are from where you are, I will do this for you. पक्का, ठीक है. That's a promise. Lock कर लिया जाए. How's the equation with Armaan now? Who's Armaan? Great question. Armaan Malik, the voice. Oh, Armaan's sweet. I've always had a good equation with him. Do these, like for the uninitiated, the voice, Kanika was the judge, Armaan was the judge, and there was some kind of controversy that happened around the song. Which song? जो मीका वाला था, कमाल है. मुझे आपको बताना पड़ रहा है. मीका वाले स्टाइल में एक कंटेस्टेंट ने गाना गाया था. There was a controversy. थोड़ा झगड़ा है ना. हाँ. Of course, but वो रात गई बात गई. हाँ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि was it staged? No, when it's there, it's not staged because it has to be what we feel and is natural. And we were told that please don't hold back. Just because कोई आपके साथ आर्टिस्ट अदनान जी थे, अगर आपसे कोई बड़ा सीनियर आर्टिस्ट है, वो कुछ कह रहा है और आप कुछ और सोच रहे हैं, please voice it. Okay. You know, even Mr. Rahman was there. And so we voiced what we felt. You see, at every level, all of us have our own exposure with music. And अरमान का अलग है, मेरा अलग है, सबका एक different. और दोनों ही सीखे हैं. अरमान ने भी सीखा है, आपने भी सीखा है. And he's a phenomenal singer. So I respect his view on everything because I've seen live how he sings. He sings brilliantly, pitch perfect, which is very rare. You know, so झगड़ा तो चलता रहता है, but we are all friends. और इस तरीके से 2024 इलेक्शन के पहले एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, politically correct statement आ गया. Do you believe in, like when you're out there on camera, politically correct statement आने चाहिए? You know, I have never taken a stand in politics in India, but today, as an Indian, maybe it's my first statement till today. I feel very proud. Not that I was never proud, but I feel very proud to be an Indian. Whatever the current government has done, it has worldwide brought India to the top. Wherever I go, we are treated differently. Everyone knows our Prime Minister. And there is something good about him that everyone says. And these are non-Indians around the world. And the most intelligent people that I have met. Not that anyone and everyone. I mean, I meet so many interesting people in Nigeria. I mean, I was shocked that everyone knows Modi. Was the treatment any different before this? Very different. For the Indians? Yes. I moved to London so many years ago, over 2 decades. The way Indians are seen today is very different to how Indians were seen then. It's a huge difference. So I am very proud to have the Prime Minister that we have, and I hope he comes back. Because I think he's given life to India. And he's there for a good cause. Why do celebrities stay away from expressing their political stand in public? Because I guess nobody wants to get involved in taking sides politically, you know, because it just doesn't work out well in the end. ना अपना
नहीं तो फिर ना घर के ना घाट के. But you expressed. I expressed because I feel like I'm more mature and I have an opinion today. And I have an opinion based on what I see. So it is what it is. एक YouTube short बहुत famous हुआ था that you sung a version of "Ooh Atava Mama." No, I sang the Hindi version. हाँ, you sang, but that YouTube short, मतलब it was out of the park. Oh. आपको पता है मैं किस तरफ जा रहा हूँ? नहीं सर. छोटा सा. "Ooh Atava Mama." Oh, you want me to sing it? Oh yes, of course. Pandit ji aa rahe hain. I thought I did something wrong. No, why will you do wrong? कमाल है यार. कनिका कभी गलत नहीं कर सकती. गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को, काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मट्ठा, एक ही रट्टा एक दुपट्टा, मर्द है बिन पेंदी लोटा. I agree. बोलेगा आया बोलेगा साला. Wonderful. How does it happen? मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप गा रहे होते हैं, रियाज भी बहुत करते हैं, रिहर्सल सेशंस भी होते हैं, लेकिन कभी ऐसे लाइव शोज में होता है कि अरे अपनी लिरिक्स भूल गए? हाँ, ऑफ कोर्स. कभी बेबी डॉल के लिरिक्स भूल जाते हैं, because you know when there's so much happening and you're very excited on stage, you can forget. And now you know we are getting older, so there's brain fog after COVID. हाँ, ये बात तो है, ये तो मैं कह सकता हूँ. तो जब भूल जाते हैं तो माइक ऐसे कर देते हैं. हाँ. अच्छा. आप गाओ. ये चीट कोड अच्छा है, ये हमें अभी तक पता नहीं था. अच्छा, टेल मी वन इंस्टेंस. फिर मैनेजर गाली देता है बाद में, ये सब क्या, you need to practice more, you need to do this more, you don't understand. I'm like, okay daddy, okay fine. Do you scold her? क्या कमाल है यार. No, चार लड़के बोलो इसको उठवा के लेके जाओ यार, ऐसे कैसे? He's harsh. So there are certain KKs in our country who have been very popular. KK Menon, एक सिंगर KK, एक किशोर कुमार साहब, and you the other KK. अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक और KK आए थे, very popular, Krishna Kaul, the rapper Krishna. Why do all these popular people have two sides to their personality? जैसे किशोर कुमार साहब हैं, he was an actor also and a singer also. और माशाल्लाह आपको तो पता ही है कि आप एक्टिंग कर सकती, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. नहीं कर सकती. अरे ठीक है, मतलब सब रियाज से हो जाता है, बट शाहरुख खान का ऑफर आया नहीं आया? No, I worked with Shahrukh. I did मेरा लॉन्च ही शाहरुख के साथ हुआ because of Happy New Year. And then I did a No, not as a playback singer and no, actually I've never placed myself into acting. Why? I don't know. Have you got offers? I'm sure you have. Yeah, a lot of people ask me, but you see, it's a whole new career. It's not that easy, and I feel that अभी तक मैंने बैया ना धरो नहीं गाया. वो तो आज भी नहीं गाया. You know? इसका लेवल बढ़ा करके हम कर लेंगे कुछ. नहीं तो मैं ऐसी गुनगुना रही थी. हाँ वो हम कर लेंगे, खेल लेंगे उसमें. But you have promised me, you'll. I have promised. बिग बॉस का ऑफर आया? रोज आता है. ये मुझे जानना था. रोज आता है. क्यों? बिग बॉस इतना अच्छा, इतना सात्विक, इतना अहिंसावादी शो है. Why don't you want to go there? Because मेरे मैनेजर को लगता है मैं एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी. क्यों? मैं तुझे भाई तुम्हारा इंटरव्यू कर लें क्या? Do you follow it? I haven't followed any Big Boss yet. Like I've watched bits and pieces. जो Instagram पे दिखता है. It's funny. हाँ, मतलब इतने पढ़े लिखे और इतने ठीक ठाक घरों से आने वाले लोग चाय और अंडे पे लड़ रहे हैं, और वॉशरूम कौन साफ करेगा पे लड़ रहे हैं. वॉशरूम भी साफ करना पड़ेगा. चलो फिर, ये तो नहीं जा रही. नहीं, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी. I share a washroom. I don't even share a washroom with my own husband or my children. वाकई में सोने दी. What do you think about these social media reels, जिनकी वजह से गाने बड़े पॉपुलर हो जाते हैं? What do you think about those songs and the contribution of social media किसी भी गाने की पॉपुलैरिटी में? My only problem with it is कि वो फिर चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. कहावतें और मुहावरे कितने चलते हैं ना ऊपी में. But I think it's also a very good way of making your music bigger. You know, it doesn't have to be. I mean, पिछले 2 सालों में मैंने इतने गाने देखे इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस के जो इतने बड़े हो गए हैं, पॉपुलर हुए हैं, only because of the reach on social media.
आपको ऐसा लगता है आपके लिए जरूरी है कि कोई भी आपका गाना फटे रील पे? इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू? I think it's important for me. I will not lie. Whom do you find interesting on social media? Right now, my favorite is the two cats. क्या politically correct जवाब? क्या तू बता के लाया है भाई? तू बता के लाया है? Are you not watching those cats? I am watching all the cats. जंगली बिल्लियां डॉन को बहुत पसंद है. No, they're two cats. The conversation between the husband and wife. I and know. boyfriend, I'm girlfriend. watching them. So funny. Are you watching them? Like आपके एल्बम में यही सब चल रहा है आजकल? Only cats are coming because I'm obsessed with it. I fall on the floor watching them. Wow, 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 wow. Like literally, it's just so funny what they say. Funny से याद What do है. you want for your birthday? Nothing. हाँ. And then, okay, what do you want to go to Dubai or Maldives? हाँ. Dubai. हाँ. And Maldives. It's very इतराने funny. से याद आया. You also my मिला अरुण and अलका याग्निक. You remind what? आप नकल उतारती है ना हाँ उनकी? हाँ हाँ. हाँ, ऐसे कैसे जाने देंगे हम? हाँ. A अलका याग्निक, B ईला अरुण का. हाँ, ईला अरुण. My God, छोटे से actually I started singing only her songs first. हाँ हाँ हाँ. All छप्पन छुरी मतवारी and I remember that song. हाथ में बोतल गले में गुलू बंद बोलो कहाँ गए थे? Oh, that was a crazy shit in the 90s. sing 1 second. हाथ में बोतल गले में गुलू बंद बोलो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? हाँ ना? Something like that. Remember? Yeah, like that. Oh my God. Yeah, I remember. I just remember my mother used to freak out कि हम शादियों में जब पहले लेडी संगीत होता था तो सब मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं पे डांस करते थे और मैं डांस करती थी मैं छप्पन चूड़ी मतवारी मैं तुझको चीर डालूंगी. चलो शादी के कुछ साल बाद ये नजर आना था, पहले ही बता दिया. Oh my God, she said तुम्हें और कोई गाना नहीं अच्छा लगता है? नहीं, मुझे इसी पे डांस करना. So why don't you sing it for us? In ईला अरुण style. उदयपुर का लहंगा हर दिल में धूम मचाए रे, जयपुर शहर की चोली हलचल सी है कर जाए रे, मेरा सतरंगी लहरिया रे आहा, लहर लहर लहराए आहा, लहर लहर लहराए. ओ दिल बर जहानी मैं हो गई मस्त दीवानी के तुझको चीर डालूंगी. काफी अहिंसात्मक गाना. थैंक यू. मैं छप्पन छुरी मतवारी मैं तेज धारवारी के तुझको चीर डालूंगी. Please don't do it, please. I think my mother was just like, please ये नहीं गाना, ये इस पे मत डांस करो. And the rebel in you said, नहीं, ऐसे कैसे? I like this song. The question that I'm sure that everybody will ask you and पूछा भी होगा पहले, कोका का ट्रिगर क्या है? कोका का ट्रिगर नहीं है. एक्चुअली इट्स नॉट समथिंग आई डोंट थिंक सो मच. जब मैं म्यूजिक बनाती हूँ वो नेचुरली एक हुक लाइन निकल के आई. उसके बाद आई गॉट आई वांटेड टू डू लाइक दिस जुगनी टाइप ऑफ सॉन्ग, पंजाबी फोकिश सूफी साउंडिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ फ्यूजन. तो हुक लाइन बनी, फिर उसका अंतरा बन गया. मैंने वीडियो तो देख लिया. यू लुकिंग किलर. उसके बाद आई वाज इन नाइजीरिया तो वहाँ आई गॉट अ नाइजीरियन आर्टिस्ट टू फीचर ऑन इट. सो इट जस्ट केम टुगेदर रियली वेल एंड फिर वीडियो भी बन गया. उन्होंने कहा ब्रेड्स बना लो. मैंने कहा ऐसे तो कभी किया नहीं मैंने, बट दे पुट बजाओ रिकॉर्ड्स पे तो बहुत कुछ होगा. पर्ल्स विद ब्रेड्स. हाँ मैंने देखा, सब देखा. सो अब हर महीने आपके लिए एक गाना है और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं. बहुत सी चीज़ें इंडिया कनेक्ट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं कनेक्ट करेंगी, लेकिन बजाओ एक मीडियम है जहाँ पर मैं गा रही हूँ जो मुझे पसंद है. एंड देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग प्ले. We'll get to that as well. Lucknow is coming out. UP is coming out. टुंडे 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 हैशटैग टुंडे. जी टुंडे के ऊपर एक गाना बनाना चाहिए. हाँ ये हाँ सब्सक्राइब द मैन प्लीज से सब्सक्राइब द माय प्रोड्यूसर विल किल मी. सब्सक्राइब टू इंडियन फोक प्रोजेक्ट इन द मिडल ऑफ दिस इंटरव्यू. प्लीज आप कह दो. Hi guys, मैं हूँ कनिका कपूर. Please don't forget to subscribe for indie and folk project. But you've asked me very generic questions, you know. I know. I have the most generic face and the most generic intellect. The harshest criticism that you faced initially in your career that actually made you think कि मुझे
करना है नहीं करना. I don't want to name a person, but someone, and it had a very big impact on my mind at that time. When I was launched and Baby Doll became a hit, I was on tour with Shah Rukh, Deepika, Abhishek, Malaika. It was a very, very strong tour and more people. So I was the only artist singer on the tour. And it was insane that in 6 months into my career, I was introduced on the biggest stages and the biggest arenas in the world with 25, 30, 40,000 people being introduced on stage by Shah Rukh Khan. I was a new girl. I was not very confident. It almost like एक साथ ही rocket ऊपर गया था. थोड़ा सीखने में समय लगता है. So I remember particularly that मैं अपने बच्चों को छोड़ के इतने पहली बार घर से निकली थी अकेले. It was my first time. Okay. So I was a very सहमी हुई लड़की, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ पहली बार स्टेज पे जा रही, और पहला स्टेज मुझे मिला है वो है 25,000 लोगों के सामने, 40,000 लोगों के सामने. ऑब्वियसली अच्छा शेक हो जाएगा. So I did my bit and I came back. The moment I came backstage and I finished, a very well-known artist said to me on my face, "You're so shit. What are you doing? What were you doing?" Like, I mean, the way that person spoke to me, already I was so shaken up and, I feel like that really affected me. And I felt, it took me years to sort of get over, that, Kanika Kapoor at the peak, everything is going well, 3 super hit songs, I've been nominated for Filmfare, this, that. And then one person comes and just hits you हथौड़े से, मतलब सर के ऊपर. मुझे लगा ये उनको नहीं करना चाहिए. Are you still friends with that person? Or you meet? No. It's a it's a very prominent part of the industry. So I will never be able to name it. But I think it was very mean. Did you notice it? She didn't even say him or her. It. Yeah, I didn't. शाबाश. It. अंताक्षरी में माँ से क्या गाती हो? मेरे ख्वाबों में जो आए. शाहरुख खान फिल्म ऑफर, हैप्पी न्यू ईयर, मेरे ख्वाबों में जो आए. बट वो मेरे सामने आ गया तो अब वो नहीं गाती. अब नहीं गाती. फिर क्या गाती हो? मतलब छुटपन में क्या गाती थी? यही गाती थी? Yeah, I love this whole album. It's my favorite. Actually, all the Shah Rukh, that music of that era was just insane. And you don't follow Shah Rukh of Pathan or Jawan, do you? No, that's not Shah Rukh for me. For me, Shah Rukh is Hey. 90s and यार all the Karan Johar films, all the Yash Raj films. Oh my God, I don't think there is that era. I wish that era could come back. But so you'll no, only see I love Shah Rukh. Of course, who doesn't? Shah Rukh, Happy New Year, film offer, Kanika Kapoor actor, Kanika Kapoor the singer, और अब तो नेट प्रैक्टिस भी हो रहा है वीडियो एल्बम्स में गानों के, है ना? Are you manifesting? No. Why not? No, I just want, my manifestation is that I should be able to sing better and sing more. That's all. After Coca, what is the game plan? No. What is the... I was very busy bringing up children. I have 3 kids. So, there's a lot that goes in. So there's a lot of time idhar udhar. Are they critical of your songs? Yeah, the kids? Of course. They'll message me, what are you doing? What are you doing? What is the worst criticism that you've heard from the kids? I mean, no, trust me, kids are very Itna harsh. नहीं होता है? No, they are very harsh. Is it? Everyone's kids are harsh. Especially on their mothers. क्या बोला है? कोई भी गाना सुन करके क्या बोला है? I don't know. I actually don't remember particularly right now, but कुछ भी मैं scratch भी बनाती हूँ, I send them on the group. Do you still stand by your statement when you said लता जी वाला जमाना गया? हाँ, वो तो बहुत पहले चला जा चुका है. मतलब there's no scope of melody anymore. It's just foot tapping music. That is why every movie 80% of the songs are all remade or inspired by. Even the songs, a lot of songs we do
are inspired by something. सोशल मीडिया पे रहने का प्रेशर है? बहुत pressure. I hate it. What do you do on social media? Is there a pressure from your manager, or No. is there pressure from your peers? कि यार No, my team. हाँ. They say you're not posting enough, or you're not posting enough, or you need to sing more, which I agree with. Hmm. So But now that you also have the responsibility of Bajao Records, yeah, so you need to be more on social media. You need to be seen Yeah. more. yeah. उस लिहाज से Actually, I have started making a huge effort Mhm. to be on social media now. I never used to care so much. What is the plan after Coca releases for Bajao Records in totality and for this particular album? So Bajao Records has a very, very interesting new artist that we are launching. I believe in that artist. I think it's going to, and you can take my word for it. I think you will remember me what I was saying in this interview. I feel this artist is going to blow up. Next thing I have is I have a whole album coming out. Hmm. It's an EP that's coming EP. out in April. Mhm. We're hoping for first week April. It's ready. Mhm. And but there's a song every month basically from me now. All kinds Your of songs. song. My songs. Hmm. There's bhajans, there's Sufi, there is Bayyana Dharo, there is That to exclusively. dance, there's a lot of interesting music coming out. Which means that you're now in a very safe space where you can experiment and where you can just give them what you feel is good music. Yeah. इतनी देर क्यों? Because blow तो आप बहुत पहले कर चुके थे. वो मैं आपको कैमरा पे अरे नहीं ये बता सकती. इंटरव्यू का मतलब ही होता है कैमरा भी बताना होता हुआ है. था, कुछ चीजें हुई थी मेरे साथ अच्छा. जिनकी वजह से एक आई वोंट से ब्रेक आ गया था, बट हम्म. कुछ चीजें हुई थी जो अच्छी चीजें नहीं थी. पर्सनल स्पेस, प्रोफेशनल स्पेस कहाँ? No, not personal space, professional space. And that's why now. And it had a huge effect on my career, on the peak of my career. But we will speak about it one day. But you'll mention it in your book one day. Not in my book, I think my series. In your series. What is the series you're talking about? You will get to know about my life a little bit more. Okay. Nice. ऐसे कैसे? You've manifested for me, you want to see me on screen. Yeah. So वेरी गुड. मतलब ऐसा होता है कि किसी भी आर्टिस्ट का पेट कितना पक्का हो सकता है कि हम नहीं बताएंगे, चाहे कुछ भी कर लो. लखनऊ का पानी पिया है. But it was wonderful talking to you, Kanika, and great time. इतने generic questions मैंने पूछे कि मजा ही आ गया. Thank you so much for watching this interview. Like, share, subscribe. We wish कि Bajao Records reaches new heights and becomes the voice of the independent artists Thank here you. and abroad. Thank you. That is the dream.